Chat, wake up everyone and sound the siren. Simeone has unfollowed Julian Alvarez on Instagram. So now Alvarez's father has unfollowed Atletico Madrid and started following Barcelona. And Simeone has unfollowed Alvarez. Really? Let me check this. Is this true, chat? Is this true? है आना जरा चेक करूं. Simeone, Diego Pablo Simeone, chat. Diego Pablo Simeone. Diego Pablo Simeone. Oh my god! Oh my god! Wow! Wow! Really? Wait, you know Julian? Boy, there is no Alvarez. He literally unfollowed Julian Alvarez. He actually did it. But that's true. That means it is actually happening. He never followed. How do you? He never followed. कभी चेक करा तूने गधे? But there is no way he did not follow Alvarez. Alvarez is Argentine. Alvarez plays for Atletico. He's literally his main guy. There is no way he never followed him. ऐसा हो ही नहीं सकता भाई. I don't believe it. He definitely followed him. Unfollow करा है भाई. You guys are trying to live in Delulu की भाई ऐसा नहीं हुआ. Nah. Chat. But that's actually crazy. The fact that Julian Alvarez ऐसे करके आ रहा है भाई. एक सेकंड chat. Julian Alvarez. ये देखो क्या कह रही है एक बार. Hansi has reportedly handed Barcelona's board a short list of summer targets this season. Some of the name on the short list are Anthony Gordon 80 million, done and dusted. Julian Alvarez 120 million, हो जाना चाहिए. Bernardo Silva रिपोर्ट ये वॉयलेंट स्पीच है, ग्राफिक कंटेंट है, इलीगल है, ये जेन्युइनली इलीगल है. And this is forcing me for suicide and self-harm. Yes. And this is also terrorism. Yes. Just to let you know, this is also terrorism. They are spreading misinformation. Where is misinformation वाला कहाँ गया? Impersonification, adult sexual content है ये, because they are portraying the fact that Barcelona and Erling Haaland are having sex and civic integrity. Yes. This is not done, chat. This is not done. How can you say this? अच्छा, तुम्हारे बाप की लॉटरी लगी है 120 का, तुम बैन और यूलियन अल्वारेज लेकर आओगे और फिर उसके बाद तुम्हारे बाप की लॉटरी लगी है, हैं? Atletico refuses to negotiate with Barcelona and do not want to sell Alvarez for less than a fee of 150 million. The chances of Alvarez staying in Madrid, however, are slim. It is very difficult, almost impossible, for Julian Alvarez to continue playing for Atletico Madrid this next season. And we can confirm this by the fact that Diego Simeone has unfollowed Alvarez. Just to check again, yes, he has unfollowed Alvarez. क्योंकि अगर हम देखेंगे, he's following Sorloth. तो तुम मुझे कह रहे हो Sorloth को फॉलो कर देगा लेकिन Alvarez को नहीं करेगा. तुम्हारी मतमारी क्या पैंच? रुको भाई. ना. That's happening. That's low-key happening, chat. एक सेकंड ना, I want to check something else. अगर मैं जाऊं Julian Alvarez की पोस्ट पे, if I go to Julian Alvarez and I go here and I go Diego बेटे, इसके बाप का क्या प्रोफाइल है? एक सेकंड, इसके बाप का नाम क्या होगा? इसके बाप का नाम भी अल्वारेज होगा. इसके बाप का नाम होगा अल्वारेज, है ना? ये इसका बाप नहीं, ये तो इसकी बहन लग रही है. ये इसका बाप नहीं. इसका बाप कौन है? गुस्तावो अल्वारेज. ये इसका बाप है क्या? ये इसका बाप है. हाँ, एक सेकंड रुकना चैट, एक सेकंड रुकना. यूलियन अल्वारेज फादर नेम गुस्तावो अल्वारेज. उसके बाप ने एटलेटिको मैड्रिड अनफॉलो एंड उसके बाप ने एटलेटिको मैड्रिड को अनफॉलो करके
Football Club de Barcelona. I have never felt this unemployed in my life. I am literally ये काम करती है औरतें अपने फ्री टाइम में, चेक करना कौन किसको फॉलो कर रहा है, कौन किसको अनफॉलो कर रहा है. This is the most औरत thing I have ever done in my entire life. Oh my god, this is like all time low. This is what international break does to you. Nah, check PSG, bro. PSG, is he following PSG? Only Barcelona. Only Barcelona, दोस्तों. Only Barcelona. Mr. Gustavo Alvarez. You know ball, my guy. You know ball. It is happening, दोस्तों. PSG and Barcelona have already made offer for Julian and both offers were rejected. Within Julian's camp, Barcelona is believed to be the preferred destination even though their financial package is lower than PSG's. On the other hand, Atletico's position is clear. They do not intend to sell him for less than a fee close to 150 and they are not willing to negotiate on different terms. I believe Atletico will defend their position for as long as possible in order to secure the highest possible fee, but Atletico is also knows internally, regardless of official statements, tweets or reports, that those are parts of strategy to strengthen their negotiation positions, and that is absolutely perfectly normal. I believe they already know internally that it will be very difficult for Julian to continue playing for Atletico next season. Alvarez, my guy, welcome to Football Club Barcelona. Welcome to Barcelona. 100% confirmed hai. It is 100% confirmed that he's leaving Atletico Madrid. Welcome to Barcelona, chat. You get it? You get it? Free Julian Alvarez. Okay, chat. Free Alvarez. That is what it is. Beautiful. भाई मेरे हिसाब से आ जाएगा चैट, मुझे ऐसा लगता है आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट आ जाएगा. Yeah, I believe that. I believe that, chat. अबे जीन दो भाई. बे भाई तुम्हारे चक्कर में कल को ये फोटो कहीं पे लीक हो गई भैया, हमारे रिश्तों में दिक्कत आ जाएगी. तुम पागल हो क्या? तुम पागल हो क्या? वैसे he looks kinda I mean the dress kinda suits him, chat, not gonna lie. The dress kinda suits him. झूठ नहीं बोलूँगा. The dress kinda looks banger on him. ठीक है. मैं एक दिल से एक सवाल पूछना चाहता हूँ तुम लोगों से. How would you all like अगर मैं अपनी स्ट्रीम के ऊपर गेस्ट्स इनवाइट करता हूँ? जेन्युइन चैट, जेन्युइन. अगर मैं अपनी स्ट्रीम के ऊपर गेस्ट्स इनवाइट करता हूँ, वुड यू लाइक दैट? डब्लू, विल दैट बी अ डब्लू चैट? दैट्स अ क्रेजी गुड आइडिया. मैंने अपना पहला गेस्ट दोस्तों इनवाइट कर लिया. पहला गेस्ट, इट्स गोना बी द ऑल माइट, द वन यू शुड नॉट नेम. इट्स द ब्यूटी कॉन्टेस्ट विनर. इट्स किलियन माओ ब्यूटीज. दैट्स गोना बी आवर फर्स्ट गेस्ट दोस्तों. जोरदार तालियां दोस्तों. That is gonna be my first guest for the World Cup. Basically the concept is कि मैं सिर्फ उन लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ जिनका वैसे भी कुछ वर्ल्ड कप के अंदर, समझ रहे हो, फ्रांस को वैसे ही नहीं चाहिए. तो डिक्टेटर वर्सेस डिक्टेटर, मतलब डिक्टेटर एंड मी. तो दैट वुड बी गुड चैट. दैट वुड बी अ ग्रेट स्ट्रीम मेरे हिसाब से. तो ये हमारी पहली स्ट्रीम होने वाली है वर्ल्ड कप की.